Hello, ji, Assalamu alaikum. I hope I am audible. Hamza, can you? जी वालेकुम सलाम। Ji, welcome to this webinar by Office of Research. This is about two funding opportunities that is available for faculty, namely Faculty Initiative Fund and Faculty Travel Grant. We have with us Dr. Shahryar Shahid. He is Associate Professor from Suleiman Dawood School of Business, and Dr. Shayan Rajani, who is from Humanities and Social Sciences. And from Office of Research, Hamza and Awas will be representing and sharing their insight, andar ki khabar, so to speak, and will be answering the questions which are mostly often routed to Office of Research by faculty about Faculty Travel Grant and Faculty Initiative Fund. Dr. Shahryar and Dr. Shayan, I'll start with FTG. This would be a rapid fire type of a thing, and I'll ask more specific questions about Faculty Initiative Fund later in this webinar. The agenda would be we would start with FTG from Hamza and Awas, and later for 15 and 20 minutes would be for FTG, followed by 15 and 20 minutes for FIF, and at the end of the session, we would have question and answer for 15 to 20 minutes. Hamza, starting with FTG, one of the most commonly asked question is how this quarterly cycle works. How one should know कि वो किस cycle के अंदर apply करे for FTG? This is a very common question. Please. जी थैंक यू फैसल। जी बेसिकली FTG के 4 साइकिल्स होते हैं। सो हर क्वार्टर में FTG हम अनाउंस करते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टर 1 जो कि बनता है जुलाई टू सितंबर, दिस इज क्वार्टर 1 ऑफ अ फिस्कल ईयर। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो ट्रेवल पीरियड हमने डिफाइन किया हुआ है दैट इज फॉर 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टिल दिसंबर। अगर आपकी ट्रेवल डेट्स आर फॉलोइंग विद इन दिस टाइम पीरियड ऑफ जुलाई टिल दिसंबर, then you can apply in quarter 1, which is basically July till September की जो कॉल होती है। फिर अगली कॉल जब आएगी it will be from October till December, और ये भी एक सेकेंड क्वार्टर है। सो बेसिकली लेकिन इसकी भी 6 महीने की विंडो है स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, एंड सब्सिक्वेंटली इसी तरह हमारे पास क्वार्टर 3 आ जाता है जनवरी टू मार्च, और फिर उसके बाद अप्रैल टू जून। लेकिन जो ट्रेवल विंडो है दैट इज फॉर 6 मंथ्स। अक्सर ये सवाल आता है कि जी मेरी अगर हम आज बैठे हुए इस वक्त फरवरी में कि आई हैव ट्रेवल, मेरे पास कॉन्फ्रेंस की आई भी है सितंबर के अंदर, तो मैं इस कॉल में अप्लाई करूं या अगले में, तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस कॉल एज वेल एंड द नेक्स्ट एज वेल। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका फंड नहीं हुआ तो एटलीस्ट फिर आपको नेक्स्ट में ट्राई आपको हो सकता है मिल जाए फंडिंग। ओके, इससे लिंक्ड एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अवैस, हु इज एलिजिबल फॉर एफटीजी? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो दे कैन अप्लाई फॉर द एफटीजी कॉल्स। जो नहीं अप्लाई कर सकते वो टीचिंग फेलोज हैं, रिसर्च फेलोज, रिसर्च लेक्चरर जो होते हैं, और एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल्सो द फैकल्टी मेंबर्स हु आर ऑन सबैटिकल या स्टडी ब्रेक पे हैं, they cannot apply for this call. However, if they will resume the office at the time of the grant, starting of the grant, then they can apply for this call. Okay, thank you. Hamza, इस पे कमेंट करें कि what is full time faculty member और रेगुलर फैकल्टी मेंबर, इसका क्या मतलब? जी रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हैं जो टेन्योर के ऊपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर जो के टेन्योर पे हैं, जो एडजंक्ट्स हैं, जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एक कोर्स पढ़ाने का, या विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनका एक शॉर्ट टर्म डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसमें नहीं कर सकेंगे। ओके हमजा, क्या क्या क्लेम किया जा सकता है अंडर एफटीजी? जी एफटीजी में आप एयरफेयर क्लेम कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फी क्लेम कर सकते हैं, वीजा फी है, इसी तरह अगर आपको वहाँ अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है, बोर्डिंग लॉजिंग, वो आप मांग सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस आपको पे करनी है, फॉर इंस्टेंस अगर आप यूएस जा रहे हैं या कुछ जगहों पे वो रिक्वायर्ड होता है कि आपने इंश्योरेंस एक फी पे करनी है, सो वो हम अलाउ कर देते हैं। उसके अलावा पर डीएम होता है विच इज डेली अलाउंस, वो एक डिफाइंड है एज पर पॉलिसी, वो भी मिल जाता है। इंटरनेशनल कम्यूटेशन अलाउंस भी मिलता है, सो विद इन आप जहाँ ठहरे में वहां पे आपको कम्यूट करना पड़ रहा है इंटरनली,
उसके लिए भी हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी इसमें एक्सपेंस आता है विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, अगर आपको कम्यूटेशन या अगर आपको और कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। What if there is a difference between budgeted and approved amount and actual expense? उसमें क्या होता है? अच्छा, दो एक्सपेंस है इसमें, एयर फेयर और कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फी, ये एज पर एक्चुअल मिलता है। सो अक्सर लोगों का ये सवाल आता है, जी मैंने जब अप्लाई किया था उस पर जहाज की टिकट 1 लाख रुपए की थी, तो अब जब मैंने ट्रेवल परफॉर्म करना है तो 2 लाख का हो गया है, तो मुझे आप बजट में अपना रीशफल करना चाह रहे हो, का चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, तो हम उस केस में फिर ये रिकमेंड करते हैं कि दो जो बजट हेड्स हैं, एयरफेयर एंड कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फी, ये आपने जितना भी मांगा हो ये आपको एज पर एक्चुअली मिलेगा। सो आपका हाँ ऑटोमेटिकली बजट इंक्रीज हम कर देंगे फ्रॉम बैक एंड। हाँ, अगर किसी और चीज में आपने वीजा में मांगे थे 10,000 रुपए, वो वीजा फी 15,000 पे पहुंच गई है, उसके लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर आपका विद इन बजट आप हैं तो हम आपको प्रोविजन अलाउ कर दें, अदरवाइज बाकी हेड्स एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस ही मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर $60 पर डे है इंटरनेशनल कम्यूटेशन, तो अगर आपका $75 का हुआ तो फिर हम आपको 60 तक ही देंगे, बाकी आपको खुद से करना पड़ेगा। Okay, Avas, recently travel policy was revised and there was a confusion about the daily allowance. तो एक्चुअली कितना है पर डीएम फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल? सर डेली अलाउंस या पर डीएम जो है वो दैट इज रिवाइज टू $100 पर डे नाउ, और जो अकोमोडेशन है वो फ्लैट रेट कर दिया है $250 पर नाइट के ऊपर अक्रॉस ऑल जोन्स, और जो लोकल कम्युनिकेशन होती है वो दैट इज $60 जो है वो पर डे आपको मिलेगा। ओके हमजा, एक और रैपिड फायर क्वेश्चन, व्हाट इफ माय ट्रैवल डेट्स फॉल्स इन द 2 कॉल्स ऑफ एफटीजी? तो किस कॉल में अप्लाई करना वुड बी एडवाइजेबल और मोस्ट सूटेबल? देखिए, मोस्टली जो ट्रेवल परफॉर्म होता है, जो हमारा पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, समर पीरियड में सबसे ज्यादा ट्रेवल परफॉर्म होता है। सो ये जो मंथ्स होते हैं अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेवल परफॉर्म किया जाता है। तो मोस्टली लोगों को इसी, क्योंकि समर में मिल रही होती है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है जिसमें वो ट्रेवल कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका इस विंडो में, अभी जिस तरह हम खड़े हैं और अभी करंट कॉल एक्टिव है, March 6 उसकी डेडलाइन है, सो इट विल बी Q4 कॉल। ये बेसिकली अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और जून तक जा रही है। तो इसमें जो ट्रेवल पीरियड हम कवर कर रहे हैं, दिस इज बिटवीन अप्रैल टिल सितंबर। इस पीरियड में आप जरूर अप्लाई करें अगर इसमें आपका आ रहा है, और अगर इसमें फंडिंग आपको नहीं मिलती, फॉर इंस्टेंस बिकॉज वी डू हैव बजट कंस्ट्रेंट्स एज वेल, तो फिर हम आपको एटलीस्ट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो के यू कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट वन एज वेल। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस रैंक कैसे होती हैं? ये एक बड़ी मिस्ट्री है। वो पता नहीं होता फैकल्टी को कि मुझे अगर मिली है तो क्यों मिली है और डिक्लाइन किया तो क्यों किया है। वो कौन सा क्राइटेरिया जिसके ऊपर इवैल्यूएशन होती है एफटीजी की एप्लीकेशंस की? जी, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया। इसका प्रोसेस बेसिकली हमने ये रखा हुआ है, एज पर पॉलिसी डिफाइंड है कि एप्लीकेशन जब आएंगी किसी भी स्कूल से, तो उनके जो स्कूल के डीन है, दैट पर्सन वुड रैंक दोज एप्लीकेशंस। अब जब उन्होंने रैंक कर दिया, और रैंकिंग वो भी पॉलिसी में डिफाइंड है कि वो रैंकिंग बेसिस पे करते हैं कि जी कॉन्फ्रेंस किस लेवल की है, किस स्टैंडर्ड की है, पेपर एक्सेप्टेंस आपकी आ चुकी है या नहीं आ चुकी भी, आपने पास्ट में कितने ट्रेवल परफॉर्म किए हुए हैं, आप इस आपका जो पेपर है उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। दे कुड बी मेनी थिंग्स, और भी कुछ डीन सोच सकते हैं। सो वी आर नॉट लिमिटिंग टू दीज फैक्टर्स, बट ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं कि जिनकी बेसिस पे हम डीन्स को ये कहते हैं कि यार एप्लीकेशंस को आप प्लीज 1 2 3 4 रैंक कर दें। नाउ दिस हेल्प्स अस के हम चाहे पास में हम ही करते रहे कि 4 अगर एप्लीकेशंस आई हैं और हमारे पास बजट था, हमने चारों फंड कर दी। अभी रिसेंट पास्ट में क्योंकि बजट हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड था, तो हमने फिर ये करना शुरू कर दिया कि टॉप रैंक एप्लीकेशंस उठा ली। सो फॉर इंस्टेंस अगर 4 एप्लीकेशंस हैं, हम 3 फंड कर सकते हैं। सो हमने फिर उसके लिए टॉप 3 को फंड कर दिया, और चौथी जो कि रिकमेंडेड थी बाय द डीन, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फंड्स वी कुड नॉट फंड इट, और फिर हमने उसको फंड नहीं किया। ओके अवैस, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीइंग एन एप्लीकेंट, वो ये होता है कि आई सबमिटेड द पेपर, 6 महीने बाद कॉन्फ्रेंस है, अभी 3 महीने रहते हैं, अभी जाहिर उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं आई, तो कैन आई अप्लाई फॉर एफटीजी? Yes, you are encouraged to apply for that call. अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर कॉल जिसके अंदर आपका ट्रेवल फॉल करता है, आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। एक्सेप्टेंस, yes,
अगर आपकी एक्सेप्टेंस आएगी तो दिस यस यू मे बी एबल टू ट्रेवल इन दोज डेट्स, लेकिन ये कि एक्सेप्टेंस अगर नहीं भी आएगी तो स्टिल यू आर एनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर दैट कॉल। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत रेलेवेंट है एफटीजी से, दैट इज के वंस द ट्रैवल इज परफॉर्म, तो बीइंग अ फैकल्टी मेंबर क्या करना है जी वैसा आप? जी जो पॉलिसी है एफटीजी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको विद इन 15 डेज जो है वो अपना क्लेम या रीइंबर्समेंट जो भी ट्रैवल से रिलेटेड है वो आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है अपनी, और सेकेंडली आपने अपने जो भी क्लेम्स हैं वो अपने सबमिट करने होंगे। ओके, थैंक यू। एक जो बात अभी डिस्कशन में आ रही थी और आई वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, दैट इज के एफटीजी पे जब अप्लाई करते हैं तो एचईसी की भी एक एचईसी ट्रैवल ग्रांट है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, दैट वाज समहाउ ऑन होल्ड फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स, लेकिन उसको रिज्यूम कर दिया गया है फ्रॉम 1 जनवरी 2023. So anyone who is applying for FTG is also encouraged to explore the funding from HEC as well. अब जाहिर उनका क्राइटेरिया इतना सख्त है और उसमें बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं जो कि उस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करती, लेकिन देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और फंडिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि ज़्यादा अप्लाइड साइंसेज और नेचुरल साइंसेज की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको मीट करने के लिए एक HEC ने रखा हुआ है। नाउ आई स्विच द कन्वर्सेशन टू FIF, or I'll request Dr. Shahryar to reflect on the first question, that is, Dr. Shahryar has the highest success rate as far as the FIF is concerned. If you have any questions about FTG, please write your question in the chat box, or we'll take your question at the end of the session. So, Dr. Shahryar, आपका जो success rate है, that is 90%. And it seems somehow you are able to crack this formula of how to write a winning research proposal for FIF. So what is the secret recipe? What is the secret sauce for writing a winning research proposal? Ji, Dr. Shahryar. Right, जी, अस्सलाम वालेकुम, thank you. I don't know winnings वो कोई secret sauce है या I've been just plain lucky. But looking backwards, I think अगर if I were to give you some tips, so to speak, based on my personal experience of winning FIF and having worked in the University Research Council. So I think एक जो सबसे something that I would put on the top of my pieces of advice is कि one should apply for almost every round of FIF. This is something that I've been doing myself, because आपको अपने chances of success को maximize करना बड़ा important है. ऐसा बहुत कम होगा कि आप एक FIF में करें और फिर वो approve ना हो. There is always a good chance, क्योंकि I think acceptance rate when I was part of URC, it used to be somewhere around 50%. पर typically हम वो एक कट लगता होता था. अभी भी शायद 50% के अराउंड होगा, somewhere around 40-50%, which is pretty good success rate. But still, there is a good chance that you cannot, you don't make the cut. So I've been applying in almost every round. So मतलब मुझे LUMS में अभी तकरीबन 9 साल हो गए, and I think I have applied for almost for at least one FIF application every year, except this one. तो उसमें से शायद I think 8 में से 7 जो है वो मिल गई, but एक दफा नहीं भी मिली थी. So उसमें जो सबसे एक तो ये चीज है, so apply in almost every round, maximize your chances of success. Another thing which I have learned from my experience is कि जो proposals हैं FIF की, or even if you're writing it for an external grant, based on my very recent experience of DAD, which again is an international grant. So वहाँ पे भी यही rules कुछ pretty much मैंने apply किए तो वो success हो गया. So मुझे लगता है कि when it comes to writing proposals, the content is obviously important, but what is more important is the way we structure and present that content. ये बड़ा important है. और उस चीज में भी जो सबसे important section होता है वो I believe introduction का section है, या जिसको हम अब non-specialized summary का section बोलते हैं ना, that's very very important. जब हम URC में थे और हम proposals को evaluate किया करते थे, तो pretty much आपका काफी हद तक decision जो है ना वो ये introduction, non-specialized summary
पढ़ के हो चुका होता था, somewhere back of the mind, it clicks and it's worth funding. So लेकिन उस पे लोग नॉर्मली ज्यादा एफर्ट नहीं करते, बट पर्सनली मैं उस सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ. आई रिविजिट दैट सेक्शन अगेन एंड अगेन. उसको आई ट्राई टू मेक इट लुक सिंपल. देखिए फिफ्थ टेक्निकली तो एक एकेडमिक रिसर्च ग्रांट है, so people tend to put all those technical and academic jargons in it, which is fine. वो होता है, लेकिन उसके लिए फिर एक सेक्शन है, there is a section later on, जहाँ पे आप फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के लिए लिख रहे होते हैं. But non-specialized को ना normally we tend to take that section very casually, but to me that is the most important section. अब उसको आप कैसे फ्रेम करें, उसमें ऑब्वियसली आप हमेशा जार्गन्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि मुझे याद है तब हमारे पास यूआरसी में बहुत सारी प्रपोजल थे जिसमें नॉन स्पेशलाइज सेक्शन जो है वो एट टाइम स्पेशलाइज सेक्शन से भी ज्यादा टेक्निकल होता था. उसको क्रैक करना, समझना बड़ा मुश्किल, स्पेशली इफ आई एम इवैल्यूएटिंग अ प्रपोजल फ्रॉम से द इंजीनियरिंग स्कूल, तो या फ्रॉम द लॉ स्कूल, तो उसके अंदर फिर बहुत टेक्निकल जार्गन्स होंगे दैट आई एम नॉट फेमिलियर विद, एंड वाइस वर्सा. उसको best way to frame that section is probably जहाँ पे you frame it in the form of some research questions upfront. You write down bullet points में 1 2 3 4 very crispy research questions. If research questions not possible, then probably your hypotheses or some statements in bullet forms. What I used to do कि मैं एक बड़ा broad question डालता था, research question, उसको I even break it down into some subsidiary questions for people to have a clearer understanding of कि scope क्या है. Another thing which I've learned is कि जो आपका topic है ना वो बड़ा important है. So pick your topic smartly, or at least frame it smartly, because what in my experience again, it may not resonate with people from other schools, but in my experience मुझे लग रहा है कि ऐसे topics जो slightly थोड़े non-mainstream होते हैं या targeting towards slightly non-mainstream populations or subjects, they stand a higher chance of somehow attracting the interest of the reader. My focus has always been on micro entrepreneurship, women entrepreneurship, child laborers, so populations like this. So उसके अंदर से आपको कुछ सोशो इकोनॉमिक और अब तो जाहिर है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसके अंदर से कुछ निकालना पड़ता है, और उसको निकाल के क्लियरली जॉट डाउन करना पड़ता है अपने रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर, और वो किसी भी चीज का निकल सकता है. आई थिंक even for SSC proposals, you can always develop that socio-economic impact, some policy impact, some practical implications. So इस तरह के projects जो हैं उनके chances of success in my experience are always higher. So pick your topic, focus on non-specialized जो summary section है, apply as many rounds as possible. Another thing is कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंटरनेशनल प्रपोजल में भी होता है कि शुरू में तो आप यू स्टार्ट एक एक्साइटमेंट होती है, यू सी दैट कि एक नॉर्मली पीपल आर कॉम्प्रिहेंसिव व्हेन इट कम्स टू फिलिंग द फर्स्ट फ्यू सेक्शंस ऑफ द प्रपोजल, बट मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स जो है दे टेंड टू लूज वेट एज दे प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंड, towards the last sections of the proposal. Writing proposal is typically a tedious process. That's the nature of the beast. Be it international proposals or local proposals, proposal writing एक tedious proposal होता ही है. And normally they come FIF के साथ तो ऐसा नहीं होता, but typically internationally they come with very short deadlines. आपको पता चलता है एक हफ्ते बाद डेडलाइन है, 2 हफ्ते बाद डेडलाइन है, और प्रपोजल टेम्पलेट खोलते तो वो एक बहुत इतना लंबा चौड़ा कोई 7-8 सफ़ों का प्रपोजल, and you get demotivated unless you already have some semi-cooked thing placed with you. Otherwise normally people वो कहते रहने दें. So मुझे लग रहा है कि जब हम एंड में जाते हैं फिफ्थ की प्रपोजल्स की तरफ, जहाँ पे implications की बात आती है, वहाँ पे
कंटेंट बड़ा थिन होना शुरू हो जाता है। शुरू में काफी अच्छा होता है, पर ग्रेजुअली आपकी जाती जाती मोटिवेशन, स्टेमिना शायद एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। बट इट्स वेरी कंपेटिटिव। सो आपको हर सेक्शन को उतने ही इंटरेस्ट से और डिटर्मिनेशन से लिखना है जितना आपने फर्स्ट सेक्शन लिखा है। This is another thing that I have practiced personally. So ये कुछ मेरी I think top 4-5 tips होंगी। That's very interesting. डॉक्टर शहरियार, आपने एक टेम्पलेट बताया है और इसमें the learning for OR is के FIF leads to an external funding as well. आपके केस में you won Adalat funding with this experience of applying to FIF. डॉक्टर शहरियार, you mentioned SSC. तो एक बड़ा ही you may call it a sensitive question, that is you have been the part of URC and you have been the applicant for FIF as well. The question is, being a natural scientist or from electrical engineering or a computer scientist, is FIF is a competitive grant, university-wide proposals are competing with each other. Electrical engineering proposal is competing with someone who is from law, from political science, from social science. What do you think, what is your opinion or what is your experience? Is coming from a specific field make an applicant a disadvantageous position or somewhat on the advantageous position? तो आपके ख्याल में जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है उसकी वजह से आपको कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो नहीं होता FIF के स्ट्रक्चर की वजह से, सिंस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा एरियाज पे रिसर्च हो रही है? नॉट एट ऑल। देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इट्स बिल्ट इनटू द स्ट्रक्चर। आपके इक्वल चांसेस हैं रिगार्डलेस ऑफ विच स्कूल यू कम फ्रॉम। इट्स जस्ट अगेन मैं वही कहूँगा कि आप किस तरह ओरिएंट करते हैं अपने कंटेंट को एंड हाउ यू एक्चुअली मेक इट साउंड अंडरस्टैंडेबल टू द जनरल ऑडियंस। आपकी प्रपोजल जो है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो एज एन एप्लीकेंट कि मेरा इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा। सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स दैट इट गोज थ्रू। तो उसमें आपका प्रपोजल जो है वो आपके जरूरी नहीं है कि वो आपके स्कूल वाले भी सिर्फ इवैल्यूएट कर रहे हो, उसमें जो है वो दूसरे स्कूल के इवैल्यूएटर्स भी हो सकते हैं। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी तब, तो कि आपकी प्रपोजल स्कूल के पास भी आती थी और फिर उसका कुछ सेक्शन जो है वो दूसरे स्कूल वाले भी, एंड वाइस वर्सा। सो और वहां पे मोस्टली जो है ना प्रॉब्लम होती थी। आपके अपने स्कूल के इवैल्यूएटर्स नॉर्मली, जैसे मेरे पास जब बिजनेस स्कूल की प्रपोजल्स आती थी तो आई टेंडेड टू स्कोर देम हाई बिकॉज मुझे वो समझ आ रही होती। लेकिन वही प्रपोजल जो हमारे कोलीग्स एसएससी से होते थे वो उसको बहुत लो स्कोर कर रहे होते थे, और उनकी प्रपोजल्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता था जब वो हमारे पास आती थी। नॉट बिकॉज के वो कोई ऐसा, मतलब इट्स बिल्ट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इट, इट्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम द वे दे वर फ्रेम्ड। सो ऐसा कोई बायस नहीं है। यस, द मोर द एप्लीकेशंस द हायर आर द चांसेस। अगर एक पर्टिकुलर स्कूल से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके इवैल्यूएटर्स आपको ज्यादा इवैल्यूएट करते हैं। सो ये था प्रोसेस में इस तरह का बायस था, क्योंकि जब मैं वहां पे था फॉर 2-3 इयर्स तो बिजनेस स्कूल से बहुत कम प्रपोजल्स आती थी, वेरी फ्यू। एसएससी से बहुत ज्यादा प्रपोजल्स आती थी। आई डोंट नो अब ब्रेकअप किया है, तब तो क्लियरली एसएससी से अगर 10 प्रपोजल्स हैं तो बिजनेस स्कूल से प्रॉब्ली 1 प्रपोजल, और सोशल साइंस से शायद 3-4 प्रपोजल्स है। ये एक टिपिकल ब्रेकअप होता था। और वो बिजनेस स्कूल से एक तो मेरी अपनी हुआ करती थी हर दफा, और एक मेरे साथ कोई एक आधी और होती थी, दैट्स इट। सो उससे समहाउ ज्यादा वहां से आ रही हैं, ज्यादा उनके पास इवैल्यूएट होने जा रही हैं, तो वो चांसेस बढ़ भी जाते थे। दैट्स व्हाई फिर इनकरेज किया कि हर स्कूल जो है वो थोड़ा सा इसको बैलेंस आउट करे। सो ऐसा कोई बायस नहीं है, एब्सोल्युटली इट्स द वे यू फ्रेम इट एंड द फ्रीक्वेंसी of application, I would say. Okay, perfect. Thank you. Dr. Shayan, my question to you is, your application was ranked top in the previous FIF call. Can you please run us through the process, how you frame your proposal, and what was the integral part that resulted your application at the top in the previous call? Thanks, Faisal. I don't know what exactly it was that colleagues found sort of worthy in the proposal, but I can share some thoughts similar to Dr. Shahryar. I think he's covered a lot of the essential things, but what I want to do is show you the
form itself. I'm going to share my screen and I hope people can see it. So that's what the form looks like. And you have these 6 questions that you have to answer. And I think just to reiterate some of what Dr. Shahryar said, the first 3 questions are in some ways the most important. The non-specialized summary, hypothesis and basis of research, and the impact. This one is what every single reviewer who will review your proposal will be reading and ranking. The non-specialists and the specialists will all be looking at these 3 sections. And then the next ones, 4, 5, and 6, only the specialized reviewers are going to be looking at this. So you really do need to make a comprehensive case for your research, its significance in your field to the university, and that you've thought it out sort of in a sophisticated enough manner. And you have to make that claim, or you have to make that case in a language that will be understood by every single person in the LUMS community. I think a lot of people are sort of concerned about having to explain their work to that kind of a broad audience. We're used to talking to our own colleagues. I'm a historian. I'm used to talking to historians. I'm a historian of mobile India, so I'm used to talking to only mobile specialists. And it is uncomfortable then for me to imagine an audience of SSE or law school or some other school, economics professor even. I don't know how they're going to understand it. I don't know what they're going to find of value in my proposal. And so there is fear and concern, but I think it's a really useful activity then to step back from your own research and re-articulate it in a way that a very broad, but of course, very intelligent audience will be reading it. So I think these first 3 parts are really crucial. They do need to be framed as broadly as possible. And these will be the ones that every single person who will be reviewing your proposal will read. These next ones are only going to be given to those folks who are from your field, the specialized reviewers who will be asked to look at this. All the proposals are sort of blind, so no one knows who the submitter is. But the other thing that's useful to know is that reviewers, both the specialized and the non-specialized ones, are basically asked to rank each section. So again, this goes to what Dr. Shahryar was saying, each section matters. And when a reviewer is asked by OR, basically you have to give a 0 to 100 ranking for each of these 6 sections. The non-specialized reviewer will only be asked to give a 0 to 100 ranking for questions 1 to 3. And the specialized will be asked to rank it from 1 to 6. So also it's useful to think about that fact that ultimately all the stuff that you're putting into each of these sections is going to have to be translated by a colleague into a numerical value, which then they'll do some numbers magic on, which I'm sure Hamza can tell us a little bit more about to sort of make it comparable to all of the other proposals that are being submitted. I think another thing that I'll emphasize from Dr. Shahryar's sort of bit is that signposting is really important. Add as many headings and subheadings as possible in each section. Emphasize the most important ideas up front in each section. I think also keep in mind that the reviewers are probably going to be reviewing this on a Thursday evening or a long day's work. They have 10 or 20 proposals to review, and they'll give your proposal a couple of minutes. So you really do want to say the most important things as quickly and clearly as possible so that the proposal is impactful. Everyone who's reading it, I think, is interested in supporting and highlighting the best research at LUMS, and that may be from any school. But I think our job as applicants is just to make that case more strongly, clearly, and quickly. I think that's all that I'll say for now.
That's interesting. Dr. Shayan, you are also URC member. Can you please run us through the process, how the structure look like of a URC when the URC receive applications for FIF? ये मेरे दिन नहीं है. अच्छा, I'll walk through. Not what the it looks Z-score like. type, not the Z-score, just the I- process. Yes, I would not be able to explain that at all. So this is my first year on URC, and I have witnessed the process, and it's been an interesting learning for me. What's been particularly interesting is that the URC doesn't sit and say, discuss the merits or demerits of each and every proposal. It's entirely done sort of क्या कहते हैं, blind. I think Hamza and his team sends out these proposals to a bunch of folks from the university. They're asked to review proposals in their field or outside their field. The URC members are also required to look at and rate a bunch of proposals, but again, without any knowledge of who these people are, we don't get their names. Those proposals are all ranked according to that 0 to 100 scale. And then each proposal is put together or clubbed together with similar disciplines, similar schools, similar fields, and then compared amongst those. So you are not directly competing if you are a historian like me. I'm not directly competing in that way with someone from engineering, from the School of Science and Engineering. I'm competing with other folks from the Humanities and Social Sciences, from the Ed School, perhaps from SDSB as well, who are similarly engaged in humanities and social sciences work. My application will be ranked against those other proposals, and numbers magic will happen to determine how much better I am doing as opposed to the other folks in that particular pool. And then once that number has been crunched, then वाकी वो ranking बनती है. How much better have you done as compared to your own colleagues in neighboring disciplines? That score is then set up against the scores from other cohorts, and the top ones get funded. So there's very little room in all of this for the URC members' own sort of commitments, ideologies. If I think all history proposals should be funded, that's really not in my power as a URC member, nor can anyone else sort of impose their own understanding of who should be funded. This happens more or less by a large set of volunteers, your colleagues from across the different schools, who do their best to evaluate these proposals on their own merit. Dr. Shayan, you mentioned you were the part of URC and you were the applicant as well. So how this conflict of interest type of a thing was managed in the review process, specifically your application. I believe Hamza ही आपको बेहतर बता सकेंगे. Okay, Hamza, again, I think one of the robust things about this is that I wasn't privy to much of this, so I don't have that knowledge. Okay. Before we move to Hamza for this magical score type of a thing, another important question that was asked about FIF review process, Dr. Sharyar, Dr. Shayan, you mentioned the do's of writing a research proposals. What are the don'ts of writing a research proposals? Your take on don'ts, jo kaam nahi karna. I think it would be the opposite of all the things that we've said. A proposal that's too dense with jargon. I think that's a big one that Dr. Sharyar has mentioned that I would reiterate. When I read proposals from other schools, I'm often struck by how intensely technical the non-specialized summaries are. And that hurts the application because they're meant to be non-specialists. They're meant to be for a broad audience of academics to understand. If it's not intelligible to that non-specialized reviewer, then that reviewer is not going to give it a good score. We are all here really interested. I think people who say yes to reviewing these proposals are curious about the kind of research that our colleagues are doing. We're excited to learn about it. We are excited to support it too.
And so when something just doesn't make sense, even though it's supposed to make sense clearly, then we find that perhaps the effort has not been put in to articulate this broadly enough, and then those proposals don't do as well. I think I'd really re-emphasize, keep a broad audience in mind and make sure that you hold the reviewer's hand through all the important parts of your proposal, and don't just sort of lean into the jargon, into the technical terms. Take a step back and really walk the non-specialist through all the amazing things that you are working on. Thank you. Dr. Shahryar, आपकी take इसके ऊपर? I think Dr. Shayan has reiterated it very well. Don'ts would obviously be the opposite of do's. But I think one thing I would probably like to re-emphasize is the fact that if you want to write a proposal, then do it wholeheartedly. Don't bother with, half-heartedly done proposals, because they will never get through. Because, as they normally say, whenever you're applying for proposals, again, be it local or international, either you do it with full conviction, wholeheartedly, or you don't do it, because then it would just be a waste of time and effort. You could have used that time and effort elsewhere in more productive way, because the process itself is so competitive now. Even within LUMS, we would be receiving so many different proposals from different schools. So it's very, very competitive. It's better to park it for the next round of funding instead, and keep working on it, keep polishing. Because I think after every 6 months, you will have the next round coming out. Next call coming out. So उसको आप रख लें अपने पास, but उसको submit करना at this point, or if it gets rejected, you would rather get demotivated and might not even apply. और ऐसा भी होता है, you get demotivated. Actually proposal सही तरह से लिखा नहीं होता, और क्योंकि आपको अंदाजा नहीं हो रहा होता कि ये कितना competitive है और कितनी proposals आई हुई हैं, आपको ऐसे लगता है अच्छा कोई बस 5-6 ही आई होंगी तो मुझे भी मिल जाएगी. ऐसा होता नहीं है. क्योंकि और हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रपोजल्स आया होता है that you never get to know about. Hence, do it wholeheartedly, and don't keep it for the last 2 weeks. That's a very, very common behavior. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब कॉल आएगी तो I will start act. By that time आप ऑलरेडी टाइम प्रेस्ड होते हैं, देयर आर अदर प्रायोरिटीज, आपके लिए टाइम निकालना, फिर एंड में क्या होता है कि 5 दिन रह जाते हैं और फिर आप राइटिंग करना शुरू करते हैं. उस टाइम फिर कभी भी वो उस तरह की सॉलिड चीज नहीं, अनलेस यू आर अ सीजन्ड ग्रांट राइटर. देयर आर पीपल हु आर नेचुरली, they are too good at writing proposals. They can actually, I've seen people writing proposals on the airport, on their mobile phones, and I always used to wonder कि यार ये कैसे, I need to sit and think and plan things, but वो पता चलता है वो तो ये काम पता नहीं कब से. So unless we have achieved that level, don't leave it for the last 2 weeks or so. Spare at least a month. When you start thinking and start talking about it, you can engage your research associates to help you with this. आप उनके साथ बैठ के start meeting them, start explaining them ideas, give them some formats. Again, it's good to have some templates in front of you and see कि किस तरह से, if there is something you can learn from different templates, you can kind of blend them together. क्योंकि proposal writing is more of an art, जो मुझे लगा है, than science. मैंने आपको पहले भी कहा था, content से ज्यादा important शायद structuring है. I'm sure मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर content और strong theoretical proposals आती होंगी. But मुझे लग रहा है शायद the recipe which is just working out for me is the structuring part of it. And the fact that I start engaging my RAs, मतलब जो आपको पिछली FIF से आ रहे होता है, you can engage that person to write the next proposal with you, and then the cycle goes on and on. This is what I have been doing. But मैं उसको 1 महीना 1.5 महीना पहले I start talking to my research associate about the next round. क्या यार ऐसे कोई ये कुछ broad ideas हैं, start थोड़ा सा इनको boiling it down, और फिर बेशक write up आप you can keep it for the last week or so, but planning process must start.
Okay, perfect. I want to jump in with a quick other Sure, thing. Sure. I think the one thing that I do is I take all grant applications as a learning process in itself and as an opportunity for me to actually genuinely rethink my research. So I do use any grant that I apply as a moment then to reach out to colleagues and say, hey, this is what I'm working on. Can you read this and give me feedback on it? And I reach out to colleagues who have won FIFs before, who have won other grants before, and who I know will give me honest feedback. And so I'm ready for some hard critique so that I can learn and I can strengthen my own project as well. I think the success of this is not just in getting money, but it's also developing a stronger idea through conversation with colleagues. And in that same vein, if your proposal does not get funded, I think that's also then an opportunity to rethink what you're up to. And then rather than to give up and become despondent, to reapply as well. It is competitive. And it's quite likely that if something doesn't happen in the first round, it may happen in the second. I have colleagues who've applied 3 times before they've gotten funded. And that's just how it rolls. It's not a reflection on our own scholarship or our value or worth as sort of scholars or humans. But I do think that each of these rejections or acceptances, each application process is an opportunity to learn and rethink our research as well. Okay, perfect. That was insightful, Dr. Shahryar, Dr. Shayan. Thank you so much for your. Faisal, sorry, if I may contribute one more point. Sure. Again, from my 7 experiences. एक चीज that I have been doing very consistently in my proposals is that every proposal there is, I make sure that there is some sort of a figurative illustration of the phenomena, the concept that I'm trying to explain. Because वो जो figure होती है ना, that illustration, वो बड़ा clearly communicate करती है आपका scope, आपकी outcomes को. So if we can somehow, अपने सारे arguments को frame कर सकें in the form of a conceptual diagram, it helps. So if you see any of my 7 proposals, I mean, they would have some sort of a figurative illustration of what I'm trying to explain. क्योंकि वो एक चीज आपकी सारी चीजों का अगर कोई confusion है भी around technical jargons, it will clarify it for the reader. Thank you, Dr. Shahryar. Hamza, Dr. Shayan mentioned the magical numbers. क्या होते हैं ये magical numbers और कैसे calculate होते हैं? जी, थैंक यू फैसल. अच्छा, मैं क्विकली एक तो जिस तरह डॉक्टर शयान ने एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं. FIF का अक्सर लोगों का ये सवाल होता है. सो प्रपोजल सबसे पहले जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको ब्लाइंड रिव्यू के लिए हम उसमें PI की डिटेल्स को निकाल देते हैं. सो PI की डिटेल उसमें नहीं होती और हमारी तरफ से कोशिश ये होती है कि हम उसको एनोनिमस टाइप करें, बट वो कुछ हद तक हो पाता है, कुछ हद तक नहीं हो पाता, बिकॉज कोलीग्स को पता होता है कौन किस एरिया में काम कर रहे हैं. फिर हम वो प्रपोजल भेजते हैं URC में. URC जो फर्स्ट पार्ट दिखाया ना डॉक्टर शयान ने, वो रिव्यू करती है URC मेंबर और उसके वो लोग जो उस स्कूल का पार्ट नहीं होते. सो फॉर एग्जांपल STSB का प्रपोजल आता है तो STSB के जो फैकल्टी मेंबर्स URC का पार्ट हैं वो पहला पार्ट नहीं करेंगे, वो सेकंड पार्ट करेंगे, बिकॉज दे आर दी स्पेशलाइज्ड रिव्यूअर्स. और फिर हम स्पेशलाइज्ड रिव्यूअर्स जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी हम उसी स्कूल से या उसी ग्रुप से हम कई दफा ग्रुप भी बना देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. सो उसमें जो फैकल्टी मेंबर है विच आर नेबरिंग कह सकते हैं आप उन्हें, उसी डिसिप्लिन के हों, तो वो हम उनसे फिर रिव्यू करवाते हैं. सो हमारे पास इवेंचुअली एक स्कोर आ जाता है. ये मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर भी कर दूं, अब आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है. इसमें ये पहले 3 सवाल हैं जो कि फॉर नॉन स्पेशलाइज्ड हैं और उसके बाद फिर सेकंड जो है वो स्पेशलाइज्ड रिव्यूअर्स के लिए हैं. दोनों में 3-3 सवाल हैं और इनको रैंक आपने करना है फ्रॉम 0 to 100 या 1 to 100. इसमें जब हमारे पास स्कोर्स आता है तो सबसे पहले इन स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाता है. हालांकि हमने ये स्कोरिंग लेबल ऊपर छोटे से करके दिए में, इफ यू कैन सी, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कई लोगों के लिए 70 बहुत अच्छा स्कोर है, कई लोगों के लिए 95 बहुत अच्छा है. सो उसको थोड़ा सा हम करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि 90 to 100 का मतलब एक्सेप्शनल है, 80 to 90 इज एक्सीलेंट, 70 to 80 इज वेरी गुड,
बट स्टिल अ फ्यू रिसर्चर्स एंड फ्यू इंस्ट्रक्टर्स, उनका कई लोगों का हाथ खुला होता है, कई लोगों का हाथ थोड़ा सा जरा, उनके लिए 50 नंबर भी बहुत बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो उसके लिए फिर हम उसको पहले नॉर्मलाइज करते हैं, किसी एक स्कूल के अगेंस्ट पकड़ के उन सबको नॉर्मलाइज करते हैं। और क्विकली मैं आपको रिव्यू जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो भी दिखा देता हूँ। मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन शायद ना कर सकूं बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट ये डॉक्टर बर्की हमारे जो होते थे पहले, उन्होंने ये प्रोसेस डिफाइन किया था। इसको जी सब मेथड कहते हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे। जी, तो ये बेसिकली मेथड है जिससे हम बेसिकली प्रपोजल्स का हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, उनका मीन निकाल के। सो इवेंचुअली इससे एसेंशियली होता ये है कि अगर हमारे पास 10 प्रपोजल आए हैं किसी एक स्कूल या ग्रुप से, सो वो 10 आपस में compete कर रहे होते हैं, और उसमें से आधे प्रपोजल्स पॉजिटिव साइड ऑफ द मीन चले जाते हैं, आधे नेगेटिव साइड ऑफ द मीन चले जाते हैं। जिनका स्कोर्स अच्छा होता है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं, जिनका स्कोर कम होता है वो नेगेटिव साइड पे। और फिर यूआरसी जो पॉजिटिव साइड ऑफ द मीन वाले प्रपोजल्स होते हैं उनको फंड कर देती है, और जो नेगेटिव में होते हैं, और वो फिर हम पूरा स्कोर जब ईमेल जाती है, जब किसी का फंड नहीं होता, तो बताते हैं कि आपका किस किस डोमेन में या आपके वैल्यूएटर्स के जो कंबाइंड स्कोर्स से। और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट कि जो हमारे सेक्शंस होते हैं ना, जिसको रिव्यू कर रहे होते हैं, नॉन जो टेक्निकल पार्ट है, जिसको स्पेशलाइज्ड रिव्यूअर्स कर रहे होते हैं, वो एटलीस्ट 4 होने चाहिए। कई केसेस में उससे ज्यादा भी होते हैं, 6-6, 7-7 लोग भी होते हैं। सो अगर 7 लोगों ने या 8 एक्सपर्ट्स ने उस एरिया को या उस क्वेश्चन को एवेलुएट किया और उसके जो नंबर दिए उनकी एवरेज लेके, तो फिर वो compete आपस में कर रहे होते हैं प्रपोजल्स। सो इसलिए कंपेटिटिव बहुत प्रोसेस है। अगेन इसके लिए पूरा एक शायद मे बी एक अलग से वेबिनार चाहिए हो जिसमें हम ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें। उसके लिए हम किसी और एक्सपर्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं, इवन हम डॉक्टर बर्की को इनवाइट कर सकते हैं जो थोड़ा सा और बेहतर इसको एक्सप्लेन करें। बट थोड़ा सा बेसिक आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दी है कि एक तो डबल ब्लाइंड रिव्यू होता है, रिव्यूअर्स को ये नहीं पता होता किसका प्रपोजल है, एप्लीकेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेरा प्रपोजल किसके पास जा रहा है। उसमें एक टेक्निकल सेक्शन है, एक नॉन टेक्निकल सेक्शन है, और फिर जब स्कोर्स आते हैं पहले हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं सो दैट द बायस इज रिमूव्ड, और फिर प्रपोजल्स आपस में, जैसे शायान ने बताया, आपस में वो compete करते हैं। ऐसा नहीं है कि डबल ई का प्रपोजल जो है या लॉ का प्रपोजल वो डबल ई के प्रपोजल से compete कर रहे हैं, वो विद इन अपनी जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जो क्लोजली लिंक्ड डिसिप्लिन हैं, उनसे आपस में compete कर रहे होते हैं। और इवेंचुअली जो बात मैंने जुमला एक बोला बिटवीन द लाइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द फैकल्टी के आपकी सबमिशंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, आपके प्रपोजल के फंड होने की, फॉर एग्जांपल एक स्कूल से 4 प्रपोजल्स आते हैं, तो पॉसिबिलिटी, ये चांसेस यही है कि इस मेथड के थ्रू 2 विल बी फंडेड एंड 2 विल नॉट बी फंडेड। और अगर यही स्कूल अगर अपनी सबमिशंस 20 कर दे तो 10 एटलीस्ट विल बी 10 से 12, मोस्टली हमारा 50 to 60% है एक्सेप्टेंस रेशो। सो 10 से 12 फंड हो जाएंगी अगर आप 20 सबमिट करते हैं। सो नंबर ऑफ सबमिशंस अभी मैटर करती हैं, तो आप लोग प्लीज सबमिशंस अपनी बढ़ाएं। जी फैसल। Ji, thank you, Hamza, for this detailed orientation of this review process. Since we are running late of time, if you have any questions, please raise your hands or just type them in the chat box. जी फैसल, 4 सवाल आए हैं। जी, Dr. Shahryar, I have a question for you. What about the conceptual papers and vlogs where one is trying to create an impact not only the students but to the wider audience? सो अगर कोई बंदा वीलॉग्स बनाता है, उससे इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो भी स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द रिसर्च है, तो व्हाट डू यू थिंक? डॉक्टर शयान कैन आल्सो कमेंट, क्योंकि वो यूआरसी के मेंबर भी हैं, कि इज दिस अंडर द प्रीव्यू ऑफ एफआईएफ? देखिए, my understanding of FIF is कि it's an academic research grant, so whatever we do must have an academic angle to it. So there has to be some significant theoretical contribution that must come out of whatever we propose. So वो अगर vlog could just be like an instrument through which you are trying to create that. But if it is just about creating an instrument, for instance, in our case, in the past there have been examples जब लोगों को लगा कि भी अगर हमने केस राइटिंग करनी है तो हम FTG अप्लाई कर सकते हैं, but those proposals were rejected right away because and their argument was कि जी case writing is also academic research, तो ये भी तो आप हमें फंड करें। But again उसके अंदर वो theoretical
रिगर होना इम्पोर्टेंट है. So वो vlog के थ्रू हो रहा है. So fair enough. So just because आप vlog पे कर रहे हैं, so that this is something that we will never hold against you, right? It's about कि उसमें से फिर theoretical contribution क्या निकल रहा है. So that's my Dr. take Shayan, on your this. take on this? I've proposed in my own research this time around, I've proposed sort of constructing a website that puts forward my research to a broader audience, in addition to doing research that builds towards a book and towards some conference papers. I think a mix of these different outputs would probably make the strongest case for reviewers. The kinds of questions that reviewers are given by OR, जो आपने वो form देखा अभी जो हमजा ने दिखाया था, उसमें for non-specialized reviewers, we are asked to evaluate section 3 on impact as it relates to teaching, knowledge, and practice. So those are broad terms, and you can fit your video log into teaching, knowledge, or practice. I think you can fit them into all three and make a convincing case for all three. Specialized reviewers in question 6 have to evaluate the value to LUMS in education, so new courses, course material, training, thesis, senior year projects, student involvement. Again, I think a video log fits really well in there. So you could make a convincing case there. I know that digital humanities is extremely big now, and I think our colleagues are aware of this too. I wouldn't see that video log would necessarily be something that reviewers would be against. I would say though, to fill it out with sort of other more traditional outputs as well, like conference presentations or peer-reviewed journal articles, in addition to video logs. Okay, Yeah. Dr. Shayar, one more question is about the budgeting. How detailed the budgeting should be, और उसको इसके साथ भी लिंक कर लें कि आपके ख्याल में आपके प्रपोजल्स का टेक्निकल पार्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था towards सक्सेस और कितना बजट कर रहा था. Right. I think before that, एक और जो something related to your last question कि vlogs वाला. So I think जो proposal तो हमें allow कर रहा है, क्योंकि अगर हमें expected outcomes देखता हूँ जो FIF application के नीचे होती हैं, तो वहाँ पे it even talks about things like hardware, software, documentary, prototype, design. So we clearly entertain those outcomes here. It's just कि उसको जो है वो फिर अगर मैं कहूँ कि सिर्फ vlog को डेवलप करने के लिए मुझे फंड किया जाए तो वो शायद probably would not be acceptable. The vlog as an outcome is acceptable clearly, but उसका purpose should be again academic or theoretical. So there has to be some angle, right? So वो आप ऐसा नहीं कि वो exclude हम कर रहे हैं. Coming to your second point, मुझे नहीं budget. I think अगर budget versus proposal देखें तो proposal is the clear winner here. Proposal is definitely a much more significant part of it. Proposal, I think budgeting in this case कोई इतनी ज्यादा complicated है ही नहीं, at least in my experience. लेकिन आपके पास एक लिमिट है 1 million. So उस 1 million के अंदर आपकी budgeting बड़ी simple सी होती है. Typically, you know, especially in social sciences, business school के अंदर या law school के अंदर, all you need is probably 1 or 2 RA, some traveling budget, and that's pretty much about it. So मुझे तो कभी वो इतना complicated process या not really the deal breaker for me. हाँ, engineering में जब हम जाते हैं तो yes, I had a chance to look at more comprehensive budgeting, but उसमें भी maximum there are like 2-3 heads that you would see. 1 million में आप कितनी कोई complicated budgeting in any case कर भी सकते. So it's not the मतलब जो decision maker है वो it's not the budgeting part but the proposal part. Technical part only. Yeah. Ji Hamza, I have a question for you. Dr. Malik Jahan is asking, visiting faculty members are eligible to apply for FIF and FTG. जी फैसल, अच्छा इसमें पॉलिसी शुरू में जो डिफाइन की गई थी ना, इस पे बड़ा क्लियरली था कि सिर्फ फुल टाइम रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स एलिजिबल है. लेकिन फिर रीसेंट पास्ट में हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स आई कि जिसमें अगर तो कोई विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है जिनका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का है और वो विद इन यानी FIF ग्रांट खत्म होने से पहले उनका वो एक्सपायर नहीं होगा,
तो फिर उस केस में हमने पास्ट में एक केस में अलाउ किया था. सो यस, द स्वीट एंड शॉर्ट आंसर वुड बी कि जी आप बिल्कुल अप्लाई करें अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज लॉन्ग इनफ कि वो FIF आप कंप्लीट कर सकेंगे. Okay. Dr. Shoaib from Life Sciences has a question. Do research collaboration related visits outside Pakistan are funded by FTG? Hamza? हाँ, ये मैंने इसका जिनको जवाब दिया है. जी, रिसर्च कोलैबोरेशन विजिट्स बिल्कुल हम फंड कर सकते हैं, हाउएवर थोड़ी सी लिमिटेशंस के साथ. ऑफ कोर्स अगर आप कोलैबोरेशन के लिए जा रहे हैं और आपको वहाँ 2 महीने ठहरना है, सो वी विल नॉट बी एबल टू फंड फॉर द होल ड्यूरेशन. हम आपको कुछ पार्शियल ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम हम देखते हैं 5 से 7 दिन तक हम फंड कर देते हैं. अगर आपका स्टे हो फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एयर फेयर का तो वही कॉस्ट है, असल तो वहां ठहरने की कॉस्ट और बाकी पर डीएम और बाकी चीजें एसोसिएटेड होती हैं. सो वो हम आपको 5 to 7 डेज तक के लिए अलाउ कर सकते हैं. आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए. Okay. Avais, what is the upper budget limit for FIF and duration of the project? Sorry. What is the upper budget limit for FIF and what is the duration of the project? Well, with the upper limit is 1 million for the FIF, and the duration of the projects is 1 year. Okay, thank you. So I think we have answered all the questions that we have और कोई received. सवाल तो नहीं है? मेरा ख्याल है मैंने कोई हाथ भी देखा था खड़ा हुआ. वो डॉक्टर अंजुम का था. आई थिंक डॉक्टर अंजुम has got Right. So we have answered all the questions, I hope. फैसल एक दफा पूछ लें अगर कोई सवाल है तो फिर I guess we should wind it up then. जी डॉक्टर अंजुम, you have raised your hand. Please ask your questions. जी डॉक्टर अंजुम, आप एक मिनट, उनको मुझे अलाउ करना पड़ेगा. Just give me a moment. जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम. आप अनम्यूट कर लें अपने आप. अनम्यूट कर लें. जी थैंक यू. अच्छा, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन. जब आप FTG के लिए अप्लाई करते हैं तो व्हेन यू आर टारगेटिंग ऐसी कॉन्फ्रेंस व्हिच इज लेट्स से AOM रिलेटेड, जैसे ईस्टर्न एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट है या एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की दूसरी कॉन्फ्रेंसेस हैं, डू यू थिंक दैट प्लेज अ रोल, आई मीन द टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो? I mean FTG की जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसमें ऑब्वियसली एक तो मुझे लगता है कि इट्स द टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ पेपर यू आर like presenting or willing to present in a conference, and the second thing is maybe the type of conference. So मुझे आपसे पूछना यह है कि इन चीज़ों का क्या रोल है when we select people for FTG? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर. जो मैंने इसका पहले भी जवाब दिया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो रैंकिंग की जाती है एप्लीकेशंस की वो डीन्स करते हैं, और डीन्स जिन बेसिस पे करते हैं वो वही बातें जो आपने भी बोली हैं. सबसे पहले वो ये देखेंगे कि पेपर आपका कैसा है, उसका अगर कोई इम्पैक्ट फैक्टर या बाकी चीजें हैं वो कैसी हैं, कॉन्फ्रेंस जिसमें आप जा रहे हैं वो कैसी है, वो जिस जर्नल में पब्लिश हो रहा है आपका पेपर या हुआ है उसकी क्या स्टैंडिंग है. उसके अलावा आपने पास्ट में कितनी एप्लीकेशंस हैं जो अप्लाई की थी और आपको मिली हैं. सो मे बी अगर आपको बिल्कुल इमीडिएट पिछली कॉल में फंडिंग मिली थी तो हो सकता है इस कॉल में आपका पेपर भी अच्छा होने के बावजूद आपको ना फंडिंग मिले. सो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे वो रैंक करते हैं, और फिर हम बेस्ड ऑन आवर फंडिंग, अगर हमारे पास लेट्स सपोज 10 एप्लीकेशंस आई हैं और हम 8 फंड कर सकते हैं, सो जो टॉप 8 रैंक्ड होती हैं फिर हम उसको फंड कर देते हैं. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. अगर कोई और फर्दर क्वेश्चन है तो पूछिए. जी थैंक यू. बहुत शुक्रिया जी. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम? नथिंग इन द चैट एज वेल. चले ठीक है, मेरा ख्याल है फैसल वी कैन वाइंड इट अप नाउ. बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जिन्होंने अटेंड किया एज ए पैनलिस्ट. डॉक्टर शहरियार आपका बहुत शुक्रिया. डॉक्टर शायान मेरे ख्याल चले गए हैं, पहले उन्होंने मीटिंग के लिए जाना था. तो हम इस जो वेबिनार है इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अपने YouTube चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर देंगे. तो अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपने दोबारा रेफर करना हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, और OR तो ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. ऑलराइट जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Thank you, ji. Allah Hafiz. Pleasure.